So why this inode is inode structure is important, because it could able to keep the different types of indexings like single index, double index, triple index, and as well as some direct blocks. So if very less file is there, here also it can be managed. If the file size is more also, that can be managed with this. So next comes the directory structure. Means once you know that the files are there, as per the normal file is concerned, the file cannot be stored separately. Rather, it has to be present inside a directory. When initially the operating system develops, as per your Unix flavor is concerned, the Unix has a number of users. Yes or no? You can create a key user, a guest user, many users you are creating or not. Yes, but as per the directory structure has divided into 4 parts. That is a single level, 2 level, tree structure, and acyclic graph. What is the meaning of this? When if you think about a single level directory structure, even if you have a 5 users, all the users are used, keep their file in a single box, and this is only one directory slash. समझ में आ रहा है क्या कर रहे हो? If you can consider about a single level directory structure, you are provided with a one box, and every user has to be put their file in that box. Yes. Then what is the problem? What is the advantage, disadvantage? Na dekh ke bolo. Security is an issue. Anybody can access any other file. You cannot create your separate kind of directories where you are creating sometimes a movie directory, programming directory, that is a PPT directory. This you can also make it. And another thing, same name, 2 files cannot be created in the this kind of things. Neither by the 2 users nor by the same person को तो छोड़ दीजिए, because if everything will be put in a single box, a.txt बोल के 2 फाइल हम create कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. So that is the problem. Then the second level directory structure has developed because of this problem. Second level में क्या हो रहा है? वो बोल रहा है कि for every user he has created a directory. Means if you have a U1, U2, U3 are the 3 users created under this, then he is creating separately one directory. But under that directory, you cannot create a directory. Means what? You have only created how many boxes? 3 boxes. And each box will be allocated for each user. Then क्या advantage होगा, क्या disadvantage होगा? Separation हो गया. Permission आपको एक restriction आ जाएगा. Because this user's file, he cannot access the other box. But in this case, everybody are keeping their in a single box, so one can access other. But here, one cannot access other. What is the difficulties? You cannot create. वो तो ठीक है. वो एक और एक duplicate file भी नहीं create कर पाओगे. But if there is a.txt file is there, can you create a.txt file here? Yes, this is possible. Yes, Dipankar. Are you getting? Folder नहीं create हो सकता है. Oh, you cannot create. So this is the 2-level directory structure. You create a directory called as user 1, user 2, user 3. Like you are creating now under home, there is a kit बोल के create करते हो. There is a kit 1, kit 2, like this. But under kit 1 and kit 2, I cannot create multiple directories. Okay, but हमको क्या चाहिए? And for me, there is a directory. For my inside my directory, I can able to create multiple directories. That comes a tree structure. So the next level comes as a little theoretical. Next topic is interesting. Tree structure. In this tree structure, what you do? In root, you can find a home, bin, lib, etc, tmp, many directories. Under home, there are many users. For every user, there is a user 1, user 2, user 3. Under this user, you can create a directory as well as file. Now you can able to maintain everything. Yes. So the tree structure is the current structure which is used inside your operating system. समझ में आ गया? But here one problem. What is that problem? Let's assume there is a user 1 or there is a user, or assume that this is a directory and this is a directory. Can I create a one file which will be used by both the directory? No. इसे क्यों चाहिए? Siblings. I will create one file, but both of them can use it. Means what? Means what? Suppose I create a.txt file. It is present in P directory, or also present in Q directory. If it is present here, when I change in the a.txt, can it will reflect in
Q Yes. directory से a.txt हो पाएगा? समझ पा रहे हो कि नहीं? What I'm saying? There is a P directory, there is a Q directory. Here there is a.txt. Here there is a.txt. If I change something here, no problem. If I change something here, can it will be reflected here? No. हो सकता है? नहीं अरे होगा simple. ना। कोई एक डायरेक्टरी में a.txt बोल के एक है और एक डायरेक्टरी में भी वही a.txt बोल के एक फाइल है. If I modify this a.txt file here, can this file will get modified? सर No, लिंक sir. करना होगा। But sometimes it is necessary. Let's take, you are working in a company. The manager told that I have created a file. If you want to update it, you update in that file. If he wants to update, you can modify it. Means same file will be shared by both the files. So this kind of things is not available in a tree structure. But if it is available, suppose this is a file, it will be used by both of them, then it looks like a graph or not. Graph में क्या होता है? What is the difference between graph and this? In graph, there is a possibility of cycle, whereas in case of tree, there is no cycle. Since it is a tree structure, कभी भी आप sharing type का नहीं रखते हैं. It is individual. But if you want to create a file which is shared among these two directory, then it is create a loop kind of things or not. That kind of things will be introduced in a acyclic graph. Yes. Then what is the scenario? सर Yes. पूछिए. सर वो प्रीवियस सिस्टम में सर शॉर्टकट यूज करके वो चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग. No, the shortcut is, even if you use a shortcut, that has to be shared among both or not. If it is a shared, means it is a link. If there is a link, it is not a tree. It must be a graph. जो आप shortcut बोल रहे हो, this is a kind of things. You create a.txt file. I'll show you now, just immediately by typing. A.txt is a file which has to be shared in both the cases. If I share it, what is the benefit? If anything I'm going to be modified here, that can be reflected here. So that is possible with the help of a link. Means both the directories can be established with this shared file with a link. And this link can be done with a two ways. One is called as a soft link and one is called as a hard link. So let's see one example how I am creating one file and both two directories are using the same file so that it can be shared. So that you can understand this is a acyclic graph. Why it is acyclic? I'll come to that point. Yes? सर Ah. सर इसमें तो साइकिल होगा भी नहीं ना, क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों का सेम है, मतलब. But it is a graph or not? But it is a graph. It cannot be a tree. Accepted or not? Even if there is no cycle exist, but it is a graph because it is directed towards him. Yes. So now let's create one particular one, and what is happening? Let's go for this. Pardon. Why it is a disadvantage? But you want, no? This is your requirement. The requirement is that I will keep a common file. Sometimes it is required. No, you don't want to create. Agar there are two persons are working in the same area, then you can say that you use this particular file, you update it. Night I'll come, I'll update the same one. But both are the two users. If there is a two users, the two users cannot use the same file. Then it needs a permission. If it needs a permission, I can also delete your file. You can also delete my file. So how can you avoid these things? But I have to. My requirement is I will create a single file, and that single file has to be shared among more than. Okay. So I'll create already P and Q are there. Let's take. I'll go to P. I'll create a ls. So it is there. So rmb.txt. It may be something will be there, and there is a cd /q. Q is also there. Then rm star. So ls here also rmb.txt. Now how many directories? Two directories. So Control Alt T, I'll create it. So this is one cd p and a cd q. What I'll do? I'll create a directory here. The directory file here. So cat greater than that d.txt. Yes. Then I'll type something. Yes. Then I'll save it. Then if you can see cat d.txt, then this content is there.
Okay, what I want to do, this d.txt has to be shared in where? This p, what p also. So this is, let's take it is p, and I want to do it. So how can you do it? I have to establish a link. How to establish a link? There is a link command, ln. Which file? d.txt. Soft. Yes. So where to link it? I have to link it with P. P. Means you are not copying. Copy means what? The same text has to be copied to another file which is created in that directory. But I am not copying it here. I am saying this particular d.txt which is present here, that is now linked where? In P directory. If it is linked here, now if you can see, there is a ls, this is created. Yes. Now what I'll do, I want to change something in this. This has to be reflected here. So if I'll go here and open this particular P file, Q file, and I will open it and type something extra. Yes, I save it here. Then I'll go to this, go to Control T, go to now P. Yes, inside the P, d.txt. Now it has changed. Means how many copies? There is one copy is there, and both are sharing this one. Now the question comes, how they are doing these things? How a same file will be maintained? So that is done by a hard link and soft link. And whatever the code I have, no, sorry, command I have written here, whatever the command I have written here, that is basically called as a hard link. Then what is the hard link and how the hard link gets works here? Okay, just look into it. If you can see ls, please remember ls minus l. See, something is written, that is this d.txt is a file, and here it is written a 2. The 2 is called as a link count. And if you can go here, same ls minus l, here also it is saying that it is a 2. What it means that? It means that if there is a P directory and if there is a Q directory, there is a d.txt I have created here. Since it is a file, this has a inode. Let's take inode number is 1093. This inode number has a direct blocks. In the direct blocks, what is written? It is written PQRST, the text is written. So this file was already created. The moment this Q establishes a link, what it does? When you write a ln command, what it does? Since P is a directory, P के अंदर क्या लिखा होगा बोलिए? It is a file. What it should be written? d.txt is a file. File का inode कितना है? 1093. What is the link count? Link count is 1. Because nobody is currently linked with him. The moment you write here, that is in Q, establish a link ln command from this dxt to dxt, what he has done, inside this Q, he has written like this, d.txt is a file. But what is the inode? Same 1093. What does it mean? Both the directories are remembering the same inode number, but now the link count immediately changes to 2 and 2. What does it mean? There is a d.txt in P also. There is an entry d.txt in Q also. Both are pointing to whom? The same inode. Since it is pointing to the same inode, when I open this file and modify it, here only it is modified or not. When I open this file and modified it, here also it is modified or not. But where I have created initially the file? Q. As per our example, where I have created this file, I have created in this Q. Let's take, now I am going to delete this. Yes, if I am able to delete this particular d.txt, then what happens? Can anybody tell me whether I can access this file or not? I can access this file. I can access hard link. So what it says, unless when you delete this file, what is his job? He has to be reduce the link count from 2 to 1. Because दोनों के पास क्या था link count? 2 and 2 था. कहां पर आप delete किए? Q में. Q में जब आप delete किए, इसका link count कितना हो गया? 1. And he is saying, when you establish a hard link, unless until the link count reach at a 0, the file cannot be deleted. So the file is still exist or not. And if you can look into this file is still exist in this particular place.
Yes, if you can see here ls minus l, the same file present, but it has changed to what? The link count has changed to 1. Are you getting my point? So what happens here? In case of what hard link, the exactly same file is present, but both the directories are making an entry of the same inode number. Same inode number. Why it is the same inode number? Because this d.txt has a inode and both of them are using the same file, then a single inode has to be maintained there or not. Yes. So how you can verify? You can make a ls minus li. Sorry. This ls minus li. What is the inode here? Just look into it. The inode is 1848 something. The inode is 1848 this. Then what I'll do? I'll establish a link. Link कैसे करूँगा बोलिए? फिर से बोल दीजिए. ln. Then file name. File name is d.txt. Then कैसे करूँगा? dot slash q. Okay. Q slash. Okay. Once it is established, now here also you check what is the ln ls minus li. Just see, same 2226 and 2226 is there or not? Same inode, but now the link count is changed to 2. Here also it has to be changed to 2. So, समझ में आ गया? Yes. So by this linking, you can create a common file which is shared among each one. Why it is called as a acyclic graph? Acyclic graph. साइक्लिक नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि ये साइकिल नहीं फॉर्म Because both the directories are referring to this and it has only in degrees. Is there any out degrees? No. If it is out degrees, आप ऐसे ढूंढते रहोगे. आप बोलोगे कि a.txt कहाँ है? वो बोलेगा कि यहाँ है. इसके पास जब जाऊंगा वो बोलेगा कि वहां है. उसके पास जब जाऊंगा वो बोलेगा कि वहां है. If it is make it, you never get it. So that's why when you establish a link, it will never make a cycle. Rather, this shared file will be referred by many such directories. It may not be one, it may be multiple directories can utilize the same file. समझ में आ गया? But it has a problem. What is this problem? Just look into it. I have written, just show you this. If this is a directory, this is another directory. When you create a link, same inode is there. Text of the inode, text of the file is this, but both the files has made an entry. This 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2, 3, 4, 5. The inode number not changing. Yes. But what is the issue? The issue is, let's assume this is a Ubuntu and this is somehow Solaris. Can you install two operating system in a same computer? Yes. Can you access his file here? नहीं. नहीं. यहाँ पे नहीं होगा ना. क्यों नहीं होगा? दोनों का डिफरेंट आइनोड होगा फिर. वो अलग हो सकता है, but फाइल आप नॉर्मली एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं? On that I'm asking. You can access one operating system files to another operating system files. Yes. Now see the problem. What is the problem in this? Assume that 1, 2, 3, 4, 5 करके और एक फाइल ऑलरेडी सोलारिस में था जिसका नाम था कि b.txt. What file you have created? d.txt. What file here it is present? d.txt. If by the linking, what you are doing? You are keeping the same inode, but both of them are making an entry with a link count of 2. Assume 1, 2, 3, 4 करके एक inode already Solaris में है. क्यों होगा? Because the Solaris and the Ubuntu both are the Linux flavor, and in the Linux operating system, every file will be represented with inode. Since every file will be represented with inode, already one file has created and stored in the Solaris whose number is 1, 2, 3, 4, 5. When I now establish a link from here to here, the same 1, 2, 3, 4, 5 present in the Ubuntu. When you make a link, now there is a 1, 2, 3, 4, 5 will be representing to whom? This file. Then there is a duplicate 1, 2, 3, 4, 5 or not. Then when you want to access this 1, 2, 3, 4, 5, the system will be confused whether it is a d.txt or whether it is a b.txt. Means this kind of hard link is not suitable if both of them are belongs to a two different file system. Because in two different file system, they are maintaining the same number of inodes. Suppose आप Solaris भी है
उबंटू भी है, उनका फाइल सिस्टम में वही आइनोड रहेगा। इनका आइनोड कहां से शुरू होता है, एक्स से कुछ तक, यहां पर भी एक्स से कुछ तक शुरू होगा। बट इफ दिस आइनोड इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर and you are establishing a link by hard link which is saying I'll copy this inode here, but when I am copying there is a two inode having the same inode with the two different names which is creating a conflict. So to avoid this conflict they are using a soft link. समझ में आया, रिक्वायरमेंट समझ में आया नहीं आया? इज इट क्लियर द रिक्वायरमेंट? नहीं, एक बार फिर से बोलो। नो सर। Again I'm saying, when you previously create these two links, whether he has created a new file or he is using the same file, same file, इस फाइल का एक inode है कि नहीं है? So when you are creating two different file, इस डायरेक्टरी और इस डायरेक्टरी में इस फाइल का एंट्री हो रहा होगा कि नहीं? हम लोग पढ़े थे ऐसे, when you create a different files there is one entry made in each file. ईच फाइल का एंट्री डायरेक्टरी के अंदर होता है कि नहीं? इनके साथ एक आइनोड नंबर भी लिखा होगा कि नहीं? इफ इट इज रिटन लाइक दिस, नाउ यू कंसंट्रेट विथ दिस, इफ यू आर राइटिंग हियर देन हियर देयर इज ए d.txt, हियर देयर इज ए d.txt, अंडर p is a directory, but directory internally it is a file, inside this file d.txt and this is written, inside your q also d.txt is a file. But what is this inode? It is same or different? It is same. Since it is becoming same, then there is only one inode. एक ही inode है। अभी बोलिए ए नहीं था, क्यों में ऐसे नहीं था, यहां पर आ जाए। सपोज सोच लीजिए कि ए वाला ऐसे नहीं था। Yes, it is with Ubuntu and this is what? This is become Solaris. Yes, इस सोलारिस के अंदर 1 2 3 4 बोल के एक फाइल हो सकता है कि नहीं? बिफोर लिंकिंग हो सकता है। सपोज दिस फाइल नेम इज बिकम द k.txt. यस, इसका एंट्री कहीं किसी एक डायरेक्टरी में होगा, इन सम डायरेक्टरी दिस एंट्री मस्ट बी देयर। सपोज नाउ यू गो टू ए डायरेक्टरी एंड एस्टैब्लिश ए लिंक विद दिस फाइल। कौन सा लिंक है? हार्ड लिंक है। व्हेन यू मेक अ हार्ड लिंक एंड व्हाट इट डज, it is creating an entry. What is this entry? The name of the file is name1. The inode is what? The inode is 1 2 3 4 5. Yes, he has created. Now inside this file system, how many files having the same inode? The two files. But as for the inode is concerned, you cannot create same inode for the two files. Conflict होगा कि नहीं? But what I need, I want to link and this file is exist. Then how to do this? So यहाँ पर हार्ड लिंक काम नहीं करेगा। हार्ड लिंक बोलता है कि ऐसे करो, बस आप सेम inode यूज कर दो, हार्ड लिंक हो गया। But if I am using a same inode, then same inode का और एक फाइल हो सकता है। So how can you avoid it? This avoidance will be done by what? A soft link. Yes, soft link में कैसे किया थोड़ा सा देख लीजिए। What it does? This was already exist in Ubuntu. इसका inode नाम क्या था? 1 2 3 4 5. What it does now, when you make a link, it is not using the same inode. It creates a separate file. और एक फाइल क्रिएट किया, उसका inode क्या है? 13579. समझ पाए? और एक फाइल क्रिएट किया, नाम क्या दिया? name2 दे सकता है या name1 भी दे सकता है। यस, आप बोलोगे सर वही काम किया, कॉपी कर दिया, वो तो कॉपी कर दिया। Now if I change anything here, can it be reflected here? No, नहीं होगा। But link बोलता है it is a share, and how it will share? He is saying he has created this file, but inside the content of the file, what he has written, you know, the path of this file. समझ पाए? वो क्या किया? He has written that /home/kit/name1. तो क्या किया? He is not creating a new file of this content. Rather, वही नया फाइल क्रिएट किया, लेकिन नया फाइल का कंटेंट में क्या लिखा? Only he has written the path name of this. समझ पाए? If it is only using the path name, जब इसको रीड करेंगे, ये मेरा ओरिजिनल फाइल था,
ए वाला कंटेंट चेंज होगा। जब इसको रीड करेंगे, व्हाट इज हिज कंटेंट, द कंटेंट इज रेफरिंग टू, सो इनडायरेक्टली यू आर एक्सेसिंग दैट फाइल और नॉट। यस, अभी क्या हुआ, यू आर क्रिएटिंग ए डिफरेंट आइनोड और द सेम आइनोड, यू आर क्रिएटिंग ए डिफरेंट, समझ पाए? हाँ बोलिए। हाँ वेरी नाइस। वो बोल रहा है कि इसमें अगर ये वाला फाइल डिलीट हो गया, ओरिजिनल फाइल, क्या करोगे? ये डिलीट होने पर कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज आई एम डिलीटिंग दिस वन 13579। इज इट अफेक्टिंग? नो, बट इफ ओरिजिनल फाइल गेट्स डिलीटेड, ही डज नॉट नो, देन क्या बोलेगा? इफ ए मर गया, इफ दिस यू हैव किल्ड हिम, देन ये इसका नाम याद रखा है, लेकिन वो आदमी अभी नहीं, जिंदा नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या करेगा? वो तो चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है ए एक्स%, लेकिन एक्स% ही नहीं है, तो आप क्या करते हो बाद में? और एक एक्स% को क्रिएट कर दो। दैट फाइल यू हैव डिलीटेड, दैट फाइल यू हैव डिलीटेड, दैट मोमेंट दैट इज नॉट एग्जिस्ट। वो रो रहा था, फिर सिंस यू हैव सीन दैट ही इज क्राइंग, देन यू क्रिएटेड इमीडिएट ए न्यू फाइल विद द सेम नेम। सिंस न्यू फाइल विद द सेम नेम, इसके पास क्या है वो याद रखा है, एक्स बोल के एक नेम था, वही क्रिएट कर दिया, बट इज इट ए सेम पर्सन? नो, इट इज ए डिफरेंट। व्हाट माय पॉइंट? यस, हां, आई विल शो। नो, कंटेंट नहीं सेव क्यों, वो भी डिलीट कर दिया। वो जानता था कि कुछ एक फाइल था, फाइल में कंटेंट क्या था वो भी उसको याद नहीं था, वो यूज कर रहा था। व्हेन यू आर गोइंग टू बी डिलीट इट, व्हेन यू रेफर फर्दर, कैन यू एबल टू रेफर? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। What my point? Yes, same thing we'll see how it is happening. सर तो फायदा क्या हुआ, उसको तो डिलीट कर देना चाहिए। हाँ देखिए पाथ कैसे पीछे, ये क्या पाथ रखा है, होम के अंदर, किट के अंदर name1, अभी तो वही है ना, मैं तो name1 करके वही फाइल क्रिएट किया। वो तुरंत ही बता, that only I am saying, that only I am saying। अरे क्या कर सर तो डिलीट क्यों नहीं कर देता है? डिलीट क्यों नहीं करता है? तो फिर इसको सॉफ्ट लिंक को डिलीट क्यों नहीं करता है? सॉफ्ट लिंक को? हाँ सर, क्योंकि अगर वो नहीं है तो no, because in case of a soft link, this person has no idea, he just know that there is a file exists, but this person has no idea that somebody has a link with him। समझ पा रहे हो ना? ये इसको रेफर कर रहा था, लेकिन इसको पता नहीं था कि कोई मुझे रेफर कर रहा है। Now you can see why it is happening। Yes, just look into it carefully। If I write here start d.txt, थोड़ा देख लीजिए क्या था इसका फाइल। It is a regular file and link it is 2 and this inode, and if you go here also stat, then it is a d.txt, here also it is become a regular file and do like this। समझ में आ गया? इसमें लिंक काउंट कितना हुआ? 2। इसमें मैं इसको डिलीट कर देता हूं। यस, सो rm what I told d.txt। yes, now you check there is no d.txt, नहीं है, and if you can go here the link count has changed to this, but उसका वही था, this what 184882226 वही फाइल है। now we'll establish a soft link। so soft link कैसे करूंगा बोलिए? ln -s जानबूझ के कर रहा हूं, then स्लैश कहां पे था? होम। यस, किट नहीं, किट नहीं, यहां पर अमूल्य, उसके बाद p के अंदर क्या था? d.txt। पूरा पाथ देना होगा, पूरा पाथ देना पड़ेगा, क्यों मैं बोल रहा हूं, नहीं तो नहीं पाएगा। यस, d.txt, उसके बाद क्या लिखोगे? // ठीक है? यस, I created it। now just look into it। ls -l sorry -li देख पा रहे हो? लिंक काउंट कुछ चेंज हुआ नहीं, एंड इफ यू कैन सी स्टार्ट, ये क्या अभी बोल रहा है? अभी भी वो बोल रहा है कि ये रेगुलर फाइल है एंड लिंक काउंट इज स्टिल 1। यस, लेकिन इस तरफ देखिए वो क्या क्या है।
ls minus li। देखो आप अगर देखोगे इसका स्टाइल डिफरेंट है। he has created a what न्यू a new content of this file। हाँ, आप अगर इसको स्टार्ट देखोगे that is d.txt। now look at it here, just see if you can see the size is also varying। दोनों फाइल सेम है बोल रहे हो लेकिन साइज इसका वेरी है। क्यों वेरी है बोल पाओगे? बिकॉज इसमें एक्चुअली कंटेंट है, इसमें ओनली 20 बाइट्स है। ऑलवेज इसका 20 बाइट ही रहेगा कि नहीं? इसमें जितना भी बढ़ा लो इसमें 20 बाइट ही रहेगा। एंड ही इज सेइंग इट इज ए सिंबॉलिक लिंक। द सिंबॉलिक लिंक इज इनडायरेक्टली कॉल्ड एज सॉफ्ट लिंक। यस, एंड आप अगर देखोगे इसका भी लिंक काउंट अभी 1 है, बट इफ यू मॉडिफाई दैट इज गेटिंग मॉडिफाइड। Yes, let's see, we'll modify these things whether it is modified or not. So if you open this, this is removed, this is removed. So I'll open, suppose P may open kiya and I modified this one and save it. Now you go to Q and d.txt. Both are using it or not? Yes, अभी एक को मार देते हैं। किसको मारेंगे? Q को अगर मारेंगे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा because he doesn't know anything about him, but अगर P को मार देते हैं then उसका फर्क पड़ेगा। So what to do? So this is about this। yes, P को मार देते हैं। So rm that is d.txt। now if you can look into it, अभी भी वो बोल रहा है कि मैं उसको किसको पॉइंट आउट किया हूं? he is referring to d.txt, but if I write now cat d.txt नहीं, क्योंकि जो पाथ को रेफर किया है वहां पर कोई नहीं है। तो व्हाट टू डू? यू क्रिएट ए वन मोर फाइल। प्रीवियसली उसका देखिए क्या था, उसका अगर आईडी 226 था, नाउ विल क्रिएट ए न्यू फाइल विद द सेम d.txt। सो हाउ टू क्रिएट? सो cat ग्रेटर देन d.txt। ओके, क्रिएट कर दिया। सो कुछ लिखा, 2 लाइनें लिखा। नाउ यू विल मेक इट दैट इज Control Z। So now it is happening। now you look into it, it is what? समझ पा रहे हो? इसका आई नोट चेंज हो गया, इसका आई नोट चेंज हो गया। लेकिन अभी अगर देखेंगे इसको cat d.txt, नया कंटेंट आ गया कि नहीं? yes or no? So what happens now? The original file is as it is, somebody is just linking with him। when the original file gets deleted, since it is established a link, no issue। yes, the content will be। समझ में आ गया? what is a hard link and soft link? in case of hard link it is only referring with the same inode, but in case of soft link it is not। and why hard link से soft link को हम आए? because the different file system cannot share the link, share a file with the help of the hard link। yes, that is the issue। समझ में आ गया? so this is basically the directory structure। ये बहुत very important topic है। हाँ? तो नेक्स्ट आया हाउ यू कैन रीड ए फाइल। बस आपका क्वेश्चन आज आंसर है, हाउ टू रीड ए फाइल फ्रॉम द हार्ड डिस्क। बस ये पिक्चर तो पूरा है बट एक एक करके हम समझा। वेयर द फाइल इज प्रेजेंट, हार्ड डिस्क। सपोज सोच लीजिए कि इसका नाम है d.txt, इसका आई नोड क्या हुआ? 1096 होगा, ठीक है। देन हु इज गोइंग टू रीड? ये सब पार्ट हमको पता नहीं है बिकॉज दिस इज माई OS, दिस यू डोंट नो। अभी भूल जाइए, कुछ लिखा नहीं है। देन वेयर आई एम नाउ इन द यूजर स्पेस। व्हाट द यूजर वांट्स टू डू? रीड दिस फाइल। कैसे रीड करता है? मैं बस आने से पहले लिख लिया था, सो टाइम आपको नहीं चाहिए। एक मिनट फोन कर। yes, so what it basically does, I want to read this file। the name of the file is test.c। कैसे रीड करता है? कोई बोल पाओगे कैसे रीड करता है? ओपन किया एंड दैट इज fd। fd क्या होता है पहले बोलो? फाइल डिस्क्रिप्टर। व्हाट इज अ फाइल डिस्क्रिप्टर? सर एक चैनल का आईडी है जिससे वो पास करे कम्युनिकेशन। हाँ, मतलब वो बोल रहे हैं कि एवरी फाइल, एवरी प्रोसेस has a default is 3 descriptor, that is a 0, 1 and a 2। ठीक है ना? 0 में क्या रहता है?
it is std in, this is std out, एंड this एरर std, yeah, समझ में आ गया? When you create, open a new descriptor, कहां पर क्रिएट होगा? 3 पे कि नहीं? उसके बाद हाँ सर, थैंक यू सर। कहां पर क्रिएट होगा? 3 पे कि नहीं? हाँ हाँ सर, हाँ सर जी। 0 1 2 था, अभी कहां हो जाएगा? 3 होगा कि नहीं? वो पहले देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। So when I open this file, my new descriptor should be stored where? In 3 place. So printer %d, comma, क्या लिख रहा हूं? Sorry. Printf double quote %d, then slash n double quote comma. Yes, step by step सीखेंगे। सही नहीं लिखा? Then I close it. हाँ? कुछ गलत लिख लिया। T ओ T नहीं। आ गया 3. Understood? Yes. Now you know this. Now my question is, where this file descriptor stored? Where this file descriptor table gets stored? मतलब ये कहां पर होता है? हाँ? ओएस के पास ही होगा ना? OS के पास या प्रोसेस के पास? पढ़े थे? What is the component of the process? प्रोसेस Component of the process क्या होता है? ओएस रिसोर्सेज, Component of the process क्या क्या था? Address space, ओएस रिसोर्स, CPU resources, हाँ CPU OS resources के अंदर एक फाइल इंफॉर्मेशन था। फाइल इंफॉर्मेशन क्या रखता है? All the file descriptor created under him will be present. मतलब कहां पर है? This table will be present है, उतना है। तो हम जान लिए कि ऐसे एक टेबल यहाँ क्रिएट हुआ है, लेकिन हम कभी अभी ए लिखे, ये थोड़ा गलत लिखा हूं, ओ होगा, ओ होगा, ओ आर, ठीक है ना? बट आप सी में कैसे लिखते हो? यू आर राइटिंग लाइक दिस। बट हम बोले कि तो सारे फाइल डिस्क्रिप्टर एक क्रिएट करता है, यहां पर तो 1 2 3 कुछ नहीं है। बट प्लीज रिमेंबर, हियर FILE इज ए स्ट्रक्चर, एंड इनसाइड द स्ट्रक्चर he is maintaining this file descriptor. Get my point? Since you are using the system call directly, file descriptor is there, but it is not shown here. But when you use the C syntax with a fopen, he is doing same thing internally. This fopen has to be called this open, and this open will be create this file descriptor. So here also indirectly the file descriptor will be stored inside the structure. मतलब fopen and open जो लिखते हैं, either in C language or in system call using, both are internally same here. Yes, confusion मत हुई। But वो क्या किया? It is creating a file descriptor. But how this file descriptor pointing to this area? Read कैसे करेंगे फिर read कैसे करते हैं? याद है ना? read कैसे करेंगे? read while कुछ this we have to make a read. Yes, कहां से करेंगे? उस फाइल डिस्क्रिप्टर से, उस फाइल डिस्क्रिप्टर से करेंगे। कितना? इट इज कहां से? FD से। और मैं 3 भी डायरेक्टली लिख सकता हूं कि नहीं? 3 भी डायरेक्ट, क्योंकि मुझे पता है वो 3 है। अगर जानते नहीं हो तो हम FD लिख लेंगे। रख के कहां पर रखेगा? सर T पे रखेगा। कितना कैरेक्टर रीड कर रहा है? सर एक ही कैरेक्टर रीड कर रहा है। बन गया? तो कहां से अभी रीड करेगा? उस फाइल से रीड करेगा, एंड दिस इज बिकम FD किसको पॉइंट आउट कर रहा है? test.2 को पॉइंट आउट कर रहा है। उसमें एक कैरेक्टर रीड करके कहां पर रखेगा? T में। देन यू डिस्प्ले दिस T। सर कैरेक्टर नहीं लेंगे T को? हाँ सर T को कैरेक्टर ले लीजिए। ओ ठीक है ना, ओ चलेगा, अभी के लिए चलेगा। हाँ ठीक है, एक्सेप्टेड। दिस C एंड क्या T। इसको टाइप कास्ट नहीं करना होगा। अब क्या डिस्प्ले करेगा बोलिए? व्हाट इज माय t2.txt? दिस हैश डिस्प्ले करेगा कि नहीं? पहला कैरेक्टर कौन है? हैश। आ गया हैश, समझ पाए? वो रीड किया। देन क्वेश्चन इज हाउ ही हैज रीड दिस हैश।
because our hash is present where? Here. Then how is going to read it here? The moment you open this file, if this file has not already opened, then the operating system maintain a table called as inode table. समझ पाए क्या करेगा वो? एक inode table. सपोज पहले कोई भी a.txt को ओपन नहीं किया है, then what he has do? He has make an entry here. क्या एंट्री करेगा? He has written that file name is this and reference count कितना है? 1. कितना बंदे अभी उसको रेफर किए हैं? कितना प्रोसेसेस? एक. वो कहां पर एंट्री किया? inode table. Along with this inode table, the operating system also maintain a one more table called as open file table. वो किसके लिए होता है? The moment you say that I get this 3 एक टेबल है कि नहीं? 3 क्या है इसका? इंडेक्स. अगर इंडेक्स है, इसके अंदर कुछ लिखा होगा कि नहीं? What will be written? It will be written the address of some location of this open file table. क्या क्या? 2 टेबल वो क्रिएट करता है. One is open file table, one is inode table. inode table में क्या पहले एंट्री किया? The file has now opened. Please clearly listen. Very very crucial. अभी जो फॉर्क इसके साथ रिलेट करूंगा, आप अगर ये समझ नहीं पाओगे तो फॉर्क वाला समझ नहीं पाओगे. What is it? He has opened this file first. During the open, if this entry is not there, he has made an entry. And इसको कितना चेंज कर दिया मैं? रेफरेंस काउंट को. I have made this reference count to be 1 minute का. Okay. हाँ, 5 मिनट में खत्म. Reference count to be 1. Since the reference count to be 1, now he is also maintaining 1. आप बोलोगे सर ये भी क्यों क्रिएट किया? एक तो लिंक था, सही था. But what he does after some time, when you open it, FD becomes 3. 3 is an index. If 3 become index, इसके अंदर कुछ लिखा होगा. क्या लिखा होगा बोला? यहां पर एक एंट्री वो मेंटेन करेगा. क्या एंट्री मेंटेन करेगा? He is referring to whom? This. And यहां पर रेफरेंस काउंट कितना हुआ? 1. And along with this, ऑफसेट एक मेंटेन करेगा. What is the offset? कौन सा कैरेक्टर अभी रीड करना वो चाहता है? कौन सा कैरेक्टर? 0. बिगिनिंग क्या है? हैश कहां पर था? 0th कैरेक्टर और नॉट? 0 मेंटेन किया. अभी थोड़ा सा एक एक करके देखो. यस. नाउ another process is also writing the same thing. This is b.c. Then what he has to do? He will be create his own file descriptor. करेगा कि नहीं? करेगा. Now when it is become another file, now what he has to do? He has to be checking the inode file whether it is there or not. Is it there? It is there. But how many are referring? So one more. Since it is one more, reference count क्या हो जाएगा? 2. समझ पाए? But he is pointing to whom? To this open file table. Open file table में उसका एक एंट्री होगा. क्या एंट्री होगा? वो बोलेगा कि फाइल नेम इज रेफरिंग टू दिस सेम a.txt, बट उसका ऑफसेट भी कितना होगा? 0. समझ पाए? 2 चीज बोल रहा हूं. इसमें कितना एंट्री अभी हुआ? एक ही एंट्री. बट इसमें कितना एंट्रीज हुआ? 2 एंट्रीज. व्हाई? One process is using this one and another process is using this one. क्यों बोल पाओगे? तो फिर क्या हुआ? मैं तो एक ही में भी बना सकता था. हाँ, वो क्या होता है? Suppose this file is reading up to 2 characters, then उसका ऑफसेट क्या होगा? 01 रीड कर दिया, ऑफसेट 2 होगा. When he has read 5 characters, उसका ऑफसेट क्या होगा? 5 होगा कि नहीं? Because 2 files separately reading this files or not. समझ में आया? Yes, इतना समझ में आ रहा है? That's why what is done? He has made these 2 entries and do like this. वही एक फाइल क्रिएट कर देते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं. Yes. So what I'll do? I'll immediately create a one more file. Let's assume that it is a test.su. So test.2 कहां पर है? इसके अंदर है. A कहां पर है? A नहीं है. test1.c कहां पर है? वही है. इसका यहां पर कॉपी कर. Yes. So if I'll read, यहां पर भी हैश रीड करेगा, वहां पर भी हैश रीड करेगा, करेगा या डिफरेंट रीड करेगा?
both has to be hash. है So if sir. it become hash, let's look into it. यहाँ पर एक scanf एक जानबूझ के लिख देता हूँ, scanf this percentage d comma ampersand k. Okay. Yes, The variable. डिक्लेयर कर देंगे इंट के, ठीक है. सो इसको ले लेते हैं, यहां पर भी लेंगे. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. रीड कहां क्या, यहां क्या, के एंड इंट. यस, आप अगर देखोगे यहाँ, इफ यू कैन लुक इनटू इट. नाउ आई सेव दिस आल्सो आई सेव, आई रन दिस फर्स्ट test1 डॉट प्रोग्राम. सो कैरेक्टर ए भूल जाइए. दिस व्हाट इज रीड, हाश रीड है, तो इसको जाता हूं, देन आई विल कंपाइल इट, डू दिस एंड डू दिस, देन हियर आल्सो. व्हाट माय पॉइंट, बोथ आर बिकमिंग हाश और हाश नॉट. देन क्यों ऐसे क्रिएट हुआ? इफ यू क्रिएटेड ओनली वन एंट्री एट दिस प्लेस, देन व्हाट हैपेंस, आफ्टर ही इज रीडिंग वन कैरेक्टर, इसका ऑफसेट 1 हो जाएगा कि नहीं? वो क्या रीड करेगा? आई. हाश इंक्लूड में हाश फर्स्ट कैरेक्टर है, नेक्स्ट कैरेक्टर आई है कि नहीं? इफ ही इज मेंटेनिंग ए सिंगल वन, सपोज ये मेंटेन भी नहीं कर रहा है, इसको अगर मेंटेन करेगा, यहाँ पर ऑफसेट एक रहेगा कि नहीं? एंड दिस ऑफसेट विल बी ग्रेजुअली चेंजिंग. अगर फर्स्ट फाइल चेंज कर दिया, सेकंड फाइल के लिए वो कहां से रीड करेगा? आई से रीड करेगा. बट डू यू वांट लाइक दिस? नो. If two processors are accessing the same file, read file, both has to be read the whole content or not. समझ में आएगा? Yes. Now एक interesting चीज आया. So that's why he is maintaining like this. Now come to this part. Last, then next class को फिर से बताऊंगा. इसको बंद कर देता हूँ. Let's take I stop this one. All बंद कर देते हैं. ये भी बंद कर देते हैं. Now all will be become closed. Okay. Now what I will do? इंटरेस्टिंग, इसको बंद कर देते हैं. नाउ आई विल क्रिएट ए फॉर्क. यस, एंड व्हाट आई डिड, आई बेसिकली डिड हियर, दिस इज बिकम के एंड इसको मैं ए ले लेता हूं, अच्छा होगा, ठीक है ना? ए, हाँ, इस टी को भी नहीं चाहिए. दिस इक्वल टू के, ठीक है? कैन आई राइट लाइक दिस? हाउ मेनी प्रोसेसेस इज गोइंग टू बी रीड दिस? 2 प्रोसेसेस. डिस्टिंग्विश कर देता हूं. इफ के इज इक्वल टू 0, do this, else do this and read this. समझ में आ गया क्या किया? Are you getting this? Yes. Then what I did, I open a file. एक एक करके करते हैं. I open this file. क्या क्या एंट्री होगा बोल दीजिए. जब पहली बार ओपन कर रहा था, इसको मिटा देते हैं. When first time I am entering, what is the entry? inode बनेगा पहले. क्या क्या एंट्री होगा यहाँ पर? 1 यहाँ पर ऑफसेट 0, रेफरेंस काउंट 1. बट नहीं. देन आफ्टर व्हाट आई डिड, आई एस्टैब्लिश ए फॉर्क. फॉर्क क्या करेगा? व्हाट द फॉर्क हैज टू बी डू? Another process. कॉपी द एड्रेस स्पेस. ए वाला जो फाइल टेबल कहां पर होता है? एड्रेस स्पेस में. इफ इट इज एड्रेस स्पेस, ए वाला पूरा कॉपी हो गया कि नहीं? यस. अगर कॉपी हो गया, यहां पर जो लिखा था यहां वही सेम लिखा होगा कि नहीं? बोल दीजिए. जो 3A था पॉइंट आउट कर रहा था, उस 3 में जो लिखा होगा, इस 3 में भी वही लिखा होगा कि नहीं? लिखा जो होगा मतलब क्या है? ए भी इसको पॉइंट आउट कर रहा है कि नहीं? समझ पाए? यस. अगर समझ पाए, इसका रेफरेंस काउंट अभी कितना हो जाएगा? 2. लेकिन इसका रेफरेंस काउंट अभी कितना है? 1. बिकॉज द सेम प्रोसेसेस का चीज अभी रेफर कर रहे हैं. सो ए चेंज नहीं हुआ, बट प्रीवियस केस में क्या चेंज हो रहा था?
this is going to be 2, this is going to be 2. Why? Because there are two different processes are referring to this one, but now एक processes का child is referring to this. Now please try to get me. If this process is reading the one character, क्या changes होगा? क्या change? मैं 1 minute में खत्म. 1 minute. If this processes are read one character, तो क्या changes होगा? Offset 1 हो जाएगा. Offset change to 1. 1. उसके बाद अगर ये प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस रीड करता है, क्या रीड करेगा? I. This should be read I and offset should be changed to 3 or not, 2 or not. 2. Getting my point? Yes. Now let's look into it whether it is happening like this or not. Yes. So if you do like this, then you do this. कौन किया? This is somebody has read these things. एक मिनट में क्यों नहीं दिखा रहा हूं वो भी बोल रहा हूं. नहीं क्यों स्लासन है बोल पाओगे? क्यों स्लासन है? बफर फ्लश नहीं हुआ है. यस, बफर को फ्लश करने के लिए स्लासन यूज कर देते हैं कि नहीं? सो भी कीजिए, रन कीजिए, रन कीजिए. कोई एक आप अगर देखोगे, somebody is displaying I and somebody is displaying has. अगर इसको रिपीटेडली रन करते हैं, कभी डुप्लीकेट आएगा, कभी भी नहीं डुप्लीकेट आएगा. अगर इसको सोचिए 5 बार हम रन कर देते हैं. यस, एग्जैक्टली. सो यहाँ पर ले लेंगे आई एंड आई शुड बी खत्म कर देंगे, नहीं तो गाली देंगे हम लोग को. सो आई फिर फॉर हो गया. Then I should be what? Tell me quick. Equal to 0. I less than 5. I should be less than 5. I plus plus. Then I plus plus. Yes. So एक loop and this one is. Now if you can run this and this. Now if you can see, you cannot find a duplicate here. Has I N C L U D E S STDI. Means what? If two processes are belongs to the same thread, then definitely which part is copied? This is copied. When it is copied, यहाँ पे reference count 2 हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ. एक कब delete होगा? Last next but थोड़ा सा छोटा सा डाउट, आप जा सकते हो. आज का अटेंडेंस फुल है. हाँ, थैंक यू. आप चले जाओ. सर एक टिप बोला सर. हाँ, सर am I audible sir? Sir am I audible? Yes, audible. You are audible. सर मेरा सर वो असाइनमेंट 2 देने पाए समय तबीयत खराब, तो मैं आपको मेल किया था सर, वो रिप्लाई नहीं आया अभी तक. तो मैं देख के आपको रिप्लाई करूंगा. हाँ सर, 642 रोल नंबर है सर. हाँ, करूंगा मैं. ठीक है. क्या सर? हाँ, दिस इज फेस फाइल सर, पैरेंट रीड हो गया सर. हाँ, बट सर चाइल्ड में रीड करे तो नहीं हो रहा. ओह, वो मुझे थोड़ा दिखा दीजिए तो. आपका एफडी आप ओपन किए, वो आरडी डब्ल्यूआर कर दिए. ओके, स्ट्रिंग था. आप टी किए, T0 किए, फिर रीड किए कितना कैरेक्टर का, कुछ बफर का रीड किए, 100 कैरेक्टर का. रीड करने के बाद एग्जिट यहाँ पर भी है. नहीं 2 मिनट में. हाँ, 1 मिनट और था. क्या हुआ? हाँ हाँ, इसका अंदर नहीं जा रहा है. नहीं जा रहा सर. इसका ये पिजन हो सकता है सर, जो हमारा ऑफसेट था सर, स्पेस तो सेम है. अगर पेरेंट रीड करे तो ऑफसेट उसका आगे आ जाएगा. चाइल्ड वही रेफर करते हैं, उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो रीड क्या करेगा? ओ, रीड कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करता. ऑब्वियस है, बट छोटा कर दीजिए ना, इसको 2 कर दीजिए, साइज को 2 कर दीजिए, तब रीड कर. यस सर, हो ना.
Okay, I'm ending now. I'm ending the meeting. Thank you very much.